This is GO-MMT Radio. GO-MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Ball baby ball. Only on GO-MMT Radio. Head, set, go. हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ GO-MMT रेडियो। मेरा नाम है सोनू। काफी दिनों बाद ये सेगमेंट हम आज फिर से ले आए हैं आपके लिए, बोल बेबी बोल, जहाँ पे वी टॉक टू आवर ट्रिपर्स अबाउट द प्लेस दे ग्रू अप इन, बेसिकली अ लिटिल बिट अबाउट देम ऑन अ पर्सनल फ्रंट। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली ये क्या करते हैं, most of us do know, and today we have Harnoor Sahni with us. He's with the corporate channel here in Bangalore. Harnoor, welcome to the show. कैसे हैं आप? बढ़िया सोनू, thank you for welcoming me. Thank you so much for joining. And before we get started, you know, with Bol Baby Bol, I want you to tell us a little bit about yourself. कि of course आप corporate channel में तो काम करते ही हैं, but tell us about your journey in MMT so far. How has it been? It has been exciting, Sonu. It's a new field for me to enter in as a travel business. So it has been good so far. I should say that I'm still in the learning process. तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, nice. तो मुझे अब that we know a little bit about you कि you know आपकी जर्नी GO-MMT में कैसी रही, tell us a little bit about yourself, हरनूर। आप कहाँ पे पले बड़े and what is it that you like to do when you're not working? ओके, सो मैं नागपुर से हूँ। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है, वहीं पला बड़ा हूँ। मेरी एजुकेशन भी सारी नागपुर से ही हुई है। तो मैंने अपनी जिंदगी के आई थिंक 25 से 26 साल नागपुर में ही स्पेंड किए हैं। I have a very emotional bond with that place. And if you ask me कि apart from what I like to do, I like to read about history, I like to read about mythology, and I sometimes like to write also. Oh lovely. किस तरह की राइटिंग करते हैं आप? कुछ भी, स्क्रीन प्लेज हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, कभी पोएट्री हो गई। Oh, very nice. काफी multi-faceted person हैं आप then. Do you intend to take this full time at some point in time? You never know. I wish to write a book sometime. Full time to you never know. Acha, good. I mean, of course, too early to plan something long term, but right. As long as वो passion है, I think it's a good thing. Harnoor, I think some cities in our country, they enjoy this amazing balance of being somewhere in between a big city and slightly bigger than a small town. And I think Nagpur will definitely be one of those. तो ऐसे शहर में पले और वहाँ पे ग्रो करने का जो एडवांटेज है, क्या है? What is it? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने साथ साथ सिटी को भी डेवलप होते हुए देखते हो। अब आप नागपुर देखोगे तो वो एक पार्शियल कैपिटल है महाराष्ट्र का। विंटर्स में इसको एज ए कैपिटल माना जाता है, अदरवाइज इट्स बॉम्बे। तो मैंने अपने साथ साथ सिटी को भी ग्रो होते हुए देखा है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो फूड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, या फिर वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो, तो इट्स अ लर्निंग जर्नी उधर भी एक सिटी के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है। Right, amazing. And obviously, so what was that one thing you saw change as you grew up in your 25-26 years of living in Nagpur? जैसा मैंने अभी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है नागपुर में देखा जाए तो उस वजह से मैंने नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बदलते हुए देखा है। बट एट द सेम टाइम नागपुर ने अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी उतना ही पास में रखा है और उसको जाने नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक्टिविस्ट अभी भी हैं कि जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं नागपुर में, हम उनको किस तरीके से कहाँ तक कंजर्व कर सकते हैं, वो हो रहा है। तो वो एक चेंज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो देखा है नागपुर में। और फूड वाइज भी पहले होता था कि एक ही सिंगल क्विजीन मिलता था। आई मीन, यू वोंट बिलीव, 10 years बैक नागपुर में एक अच्छा मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट नहीं था। अच्छा। और आज आपको एक ही क्विजीन के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उस तरीके का डेवलपमेंट भी देखा है। Right. Oh, that is amazing. Harnoor, how is the culture of Nagpur little different from the rest of Maharashtra? Because I think आप भले ही एक सिटी के हो, मुझे लगता है कि हर सिटी has its own vibe. So
Tell us a little bit more about the culture of Nagpur. कल्चरली नागपुर हाँ बहुत डिफरेंशिएटेड है बाकी सिटीज से. अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो जो नागपुर में मराठी बोली जाती है वो बॉम्बे की मराठी और पुणे की मराठी से बहुत अलग है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड मराठी. तो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इट इज इजियर टू लर्न एंड इट इज इजियर टू स्पीक ऑल्सो. तो एक तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. दूसरा, नागपुर का अपने एक डिस्टिंक्ट फूड क्विजीन भी है. जैसे आप बॉम्बे पुणे का कोई स्टेपल फूड क्विजीन नहीं है, पर नागपुर का खुद का एक फूड क्विजीन है जिसको वो साउजी बोलते हैं. तो इट इज बेसिकली, हाँ जी, तो इट इज बेसिकली अ कम्युनिटी जो होम किचन्स चलाती हैं. अब वो धीरे धीरे कमर्शियलाइज हो गया एंड इट हैज बिकम अ आइडेंटिटी ऑफ वेयर नागपुर कम्स फ्रॉम. फिर apart from that, Mr. Baba Saheb Ambedkar had a very huge influence on Nagpur. So his presence is equally important when it comes to Nagpur, and the community is very proud of it. And other than that, Nagpur is becoming a medical hub for the smaller towns around in Maharashtra, which don't have this facilities, so they come down to Nagpur for their medical facilities and also education as well. Right. And as you said, ये सावजी के बारे में हम थोड़ी और बातें करेंगे a little while from now. I think Saoji is not very vegetarian friendly, if I'm not correct. I think that is a myth that I like to burst. Oh, really? Wonderful. Yes. Wonderful. Then now when I think of Saoji, I only think of non-vegetarian. But you told me that ऐसा नहीं है. So let's talk more about this. See, I'll tell you. आप जब एक नॉन-वेज मेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 2 या 3 ऑप्शन से ज्यादा नहीं होगा. चिकन होगा, मटन होगा या कीमा होगा. लेकिन आप साउजी, एक अगर आप अच्छे साउजी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको वेज ऑप्शंस एक्चुअली नॉन-वेज से ज्यादा मिलेंगे. आपको अगर मैं गिनाना चाहूँ, आई होप आई डोंट वाटर योर माउथ राइट इन दिस. Okay, I'm going to try to control, okay? Yeah. So you will get 2-3 varieties of dal in a Saoji style. You will get वांग्याची भाजी, उसका मतलब बैगन की सब्जी होता है. साउजी स्टाइल, हाँ जी, वो मिलेगा. आपको एक पातोड़ी रस्सा करके एक डिश होती है, वो मिलेगा. तो वो एक्चुअली बेसन से बनती है. बेसन के छोटे छोटे पीसेस काट के साउजी की ग्रेवी में दिया जाता है. और अब थोड़ा कंटेम्पररी भी चले गए हैं साउजी में, पनीर भी मिलने लग जाएगा आपको. तो ऐसा नहीं है कि वेज ऑप्शंस नहीं है, वेज ऑप्शंस भी बहुत मिल जाएंगे आपको. So there you go. If you are a vegetarian planning a trip to Nagpur, then you don't have to be worried कि मतलब बस साउजी मिलेगा, हमें क्या मिलेगा. But tell me, Harnoor, what is the most popular breakfast dish in Nagpur? Tarri poha. Hands down, tarri poha is the most popular breakfast dish in Nagpur. Yes, and it is delicious. तो मुझे 5 ऐसे शब्द आप मुझे बताएं जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ when I'm in Nagpur so that it makes easy for me to have a conversation. Okay, तो ये थोड़े funny भी हो सकते हैं, थोड़े brash भी हो सकते हैं. तो पहला word that instantly comes to me is how. So how is something if you are agreeing on something. So it is a mixture of ha from Hindi and ho from Marathi. So it becomes how. How, okay, very nice. अच्छा, हाँ. Okay. Second word I'll say is माहौल. अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है या किसी ने एकदम वाइब एकदम सेट कर दिया है तो सब बोलते हैं यार क्या माहौल बना हुआ है. तो माहौल इज द सेकंड वर्ड. थर्ड, अगर किसी को डायरेक्शन देना है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि उधर जाओ या इधर जाओ. हम बोलते हैं कि आप राइट मारोगे तो वो बिल्डिंग गिरेगा, आप लेफ्ट मारोगे तो वो दुकान गिरेगा. तो आपको डायरेक्शन आप जब दोगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि वो वहां गिरेगा, वो वहां गिरेगा, तब समझेगा आगे जाके लोगों को. तो गिरेगा इज द वर्ड. यस, गिरेगा इज द वर्ड. ओके, वाओ, ओके. एंड फोर्थ आई वुड से कि अगर कोई आगे से आपको गुस्सा करता है या आपके ऊपर चढ़ता है तो हम सीधा बोल देते हैं ए ज्यादा गरम मत दे. तो गरम मत दे इज अ वेरी नागपुरी लैंग्वेज. एंड फिफ्थ वर्ड वुड बी अ यूनिवर्सल वर्ड दैट वी एड्रेस एवरीवन विद एंड दैट इज मामा. Everyone is a mama in Nagpur for everyone. Like a bro would be a mama, a police wala would be a mama, a shopkeeper would be a mama. अच्छा, इसका फीमेल वर्जन क्या है फिर? मामी. Okay, very nice. Mama और मामी, very nice. तो I think these words should help you feel at home in Nagpur. बड़ा आप इस्तेमाल करें if you go to this place. Harnoor, of course, you know, you made us like एक थोड़ा सा ट्रेलर आपने दे दिया about the culture, food, etc. in Nagpur. Now tell me, if any of us wants to visit
visit Nagpur for a day or two? What are the things that we should do when we are in this city? Okay, you should definitely visit either of these two lakes in Nagpur, which are the good hangout place. One is called the Ambazeri Lake and one is called the Telankhedi Lake. Okay, they are nearby. You can visit there. You have various street food options there. You can chill there, just look at the sunset happening. So it is a very chill place. If you go to Nagpur, you should go there. Then, as I said, you should definitely try a Sauji joint if you are in Nagpur. Plan a meal there, and I'm sure you won't be disappointed. Right. Thirdly, Nagpur also has a historical touch to it. So there is a fort called Sitabardi Fort. So you can also plan a visit there, though it is only open on weekends. So please keep that in mind if you are coming down to Nagpur on a weekend. And third, fourth, I think, Nagpur is also called the gateway to the national parks of India. So if you are in Nagpur, you have a day or two to spare, you can go to the Pench National Park or the Tadoba National Reserve and maybe spot a tiger. Right. Nice. So that is what you can do when you are in Nagpur. And also, if you're planning a trip, all the trippers who are listening to us right now, you can always ask our friend Harnoor here. I think he'll be more than happy to help you. Harnoor, thank you so much for your time. And thank you so much for talking about Nagpur, a place that you grew up, a place that is so close to your heart. And I hope that we get to talk to you again sometime soon. Thank you. Sure. Bye-bye. And with that, it's a wrap on today's episode of GO-MMT Radio. Until we meet next time, stay healthy, stay safe, and keep smiling. This is me, Sonu, signing off. And now it's time for some really, really talented Go Trippers to perform for you. We've got S. Jyotika, who is an executive from the Human Resources from Gurgaon, singing for all of us right now. शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए कल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए. Hey Go Trippers, you're listening to Go-MMT Radio and this is Shraddha. Ayo, Shraddha. Head, set, go. Dear Go Trippers, the excitement is palpable as we are just one day away from the much-awaited webinar on Rails SEO system in technology at Make My Trip, led by Sambit Sarangi, SVP Engineering, Akhil Pratap Singh, Associate Director Engineering, Rajat Arora, Deputy Manager SEO. Date 24th November, Friday. Time 11 a.m. This is a fantastic opportunity for all technology enthusiasts to gain insights and knowledge. Register now. You must have already received a registration email from TechHR. For any further details, feel free to reach out to Ravi Charashia or Manika Dhamija from the HR team. We look forward to your active participation. To listen to your favorite Go-MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. Visit the Go-MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.